Left side, left side. Just look straight. Right. One. Now left, left, left side. Hi, how are you? यहाँ से आ रही है। 90s की memory? I've always worn their brand products. I guess they're the most comfortable ones, and while growing up also you have very few limited options for like really good brands in terms of shoes, in terms of when you're going to a gym, or the fact that you can't team up many cool looking shoes with your dresses. So they have such a cool variety, especially the white shoes. I love their white shoes, and I feel like it's such a huge brand, globally known. So yeah, I've always bought their stuff. हाँ, एक आ रहा है ऋतिक वर्सेस टाइगर, which is not the official name of the film, but that's how it's trending, and it's out on October 2nd, 2019. So sweet. So it's all about the Reebok shoes there, and I've just teamed it up with a casual flowy dress. So this is one of the coolest things that I like about Reebok, that you can even team it up with anything casual, anything dressy, with your fitness, sportswear. So it's quite versatile that way. Thank you. Money. What's up? How are you? I don't know how I remember your face here, but very clearly. Come. After these guys. Hello. Bolo. No Reebok shoes. Unfortunately, they don't fit me because I'm a small person and shoe sizes, I don't know where they start from, but you'll have to custom make shoes for me, I'm like a size, you have to, because मेरा size 2.53 है जो बनते ही नहीं है मुझे सारे जूते पर्सनलाइज करने पड़ते हैं हाँ बोलो Yeah, actually one of my first pairs of sports shoes were Reebok only. I think it goes back because my father and mother were Reebok fans, so I'm guessing कि वो एक brand power जो है जो थोड़ी सी एक है कि श्योरिटी वाली brand है. So I was a child, but my parents bought me Reeboks only सबसे पहले. And for me, their logo is the most iconic. I mean, Reebok Classic can come, and a lot of other designers and a lot of other brands can come. But the Reebok ka logo hai for me has been the most is the highlight of the entire Reebok series. और कुछ? '90s की यार मेरी शाहरुख खान की सारी पिक्चरें बड़ी फेवरेट थी. आप दिल तो पागल है ले लो, आप कुछ कुछ आता है ले लो, आप उस वक्त आई थिंक फॉर मी राज एंड राहुल वर लाइक द बॉयज. So I think, and plus in Dil To Pagal Hai, they did an entire sports look, right? Karishma had come with this entire, so for me it was like a hit. That suddenly Bollywood has become this, and athleisure then had become like a look. So that is my most vivid memory. If you want to link the two. हाँ यार, I love होली. मुझे बड़ी अच्छी लगती है होली खेलनी. I love colors, I love water, I love friends, I love the madness all together. बट इस साल मैं एक्चुअली शूट कर रही हूँ या काम कर रही हूँ, तो पता नहीं अगर खेल पाऊंगी कि नहीं. होली विश. I want to wish all the viewers a very very fun Holi.
keep it safe, keep it responsible, but have a blast. Yeah. All right. Yes. चले? Come, Shivangi. Hey! इतना तो बनता ही है ना. Oh my God, that's a chunky camera you have. ना बड़ा लेके घूम रही है. बिल्कुल. Thank you. Hi, कैसे हैं आप? मुझे आज ही मिले हैं जी. ये जो पूरा कलेक्शन है वो 90s के स्टाइल पे आधारित है, जो मुझे अभी समझाया गया है इनसे. बट इट्स अ वेरी कूल कलेक्शन. इट्स ऑल अबाउट ब्रिंगिंग रेट्रो बैक एंड आई लव माई पेयर ऑफ स्नीकर्स. इनमें जैसे कि आप देख सकते हैं काफ़ी रंग बिरंगे से हैं एंड आई जस्ट गॉट देम टुडे एंड आई एम गोना मेक गुड यूज ऑफ देम. जूतों का मेरे लिए ज़्यादा यूटिलिटेरियन पर्पस होता है. मैं इस्तेमाल बहुत करता हूँ, भागता बहुत हूँ, कूदता बहुत हूँ. तो दे नीड टू बी comfortable. That's my first priority, and these are extremely comfortable. Reebok is an iconic brand, and it's been known to deliver footwear for people over the years that has been utilitarian and that has been stylish as well. So so I guess that's what they represent. 90s की तो कई सारी मेमोरीज है. I'm a 90s kid. Reebok shoes की कुछ खास नहीं है, but I remember having a pair of Reebok shoes when I was 5 years old, जो छोटे से मतलब मेरे छोटे छोटे पाँव में जो फिट होते थे. So I do remember having a pair of Reebok shoes and मुझे 1.5-2 साल चले और उसके बाद मेरे पाँव थोड़े बड़े हो गए. So that's my memory. And हम आपसे डेली मिलते हैं, ढेर सारे क्वेश्चंस करते हैं. डेली तो नहीं मिलते. जब भी मिलते हैं ढेर सारे क्वेश्चंस करते हैं, लेकिन जब आपकी कोई जान लीजिए आपसे ऑनलाइन पूछती है इस तरह के सवाल कैसे लगते हैं आपको? देखिए, इस तरह के सवाल तो मुझे लगता है इससे बेहतर सवाल आप लोग ने हमें पूछे हैं. माशाल्लाह इतने कमाल के सवाल पूछते हैं आप कभी कभार कि आपकी आज का मौसम कैसा है और ये कैसा है और वो कैसा है. तो अगर पूछेंगे तो मुझे लगता है उन्होंने भी आपसे ही प्रेरणा ली होगी ये सवाल पूछने के लिए. Ishan, in a few words, what's the most 90s thing about you? Most 90s thing about you? probably my taste in music. It's fairly eclectic, but I love listening to 90s music. A lot of Michael Jackson. One habit that you still carry from the 90s? One habit that I carry from the 90s. To pick one out of many, I'm sure. Living and breathing, I started that in the 90s. Breathing is a habit, no? निशान जी, हमें 2019 में आपके अपकमिंग प्रोजेक्ट का इंतजार है. जी. Also, there is a news you are doing a biopic. Like I said, like I've always said कि अच्छे से announcement करेंगे उसका. And I'm as excited as you are for me to share that news with you. Trust me on that. I'm not being stingy or anything. मैं कुछ छुपाने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ. But सब ढंग से अच्छे से करेंगे and very soon I will share that with you. Where did you hear that news? Biopic वाला? We are the media people. We are the media people, of course. Ishan, if you could sum up Asterisk in one word for you. Retro. निशान जी, एक होली विश आपकी तरफ से. होली विश ऑफ कोर्स. मैं सारे दर्शकों को विश करना चाहूँगा वेरी हैप्पी होली. मौज मनाइए, खूब पिचकारियाँ इसका इस्तेमाल कीजिए, बट ट्राई एंड सेव वाटर बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. और मुझे एक चीज़ अच्छी नहीं लगती है जब लोग अंडे फेंकते हैं, वो मत करिए प्लीज़, बट एंजॉय होली. थैंक यू, बाय.